Good morning, everyone. I hope I'm audible and visible to all of you. Good morning, Priyanshu. Very good morning. Okay, so let's start with today's session. So, good morning, everyone. Welcome back to our channel, Rostrum Legal. So, today we are here on 9th of October 2024 in the class of Legal News Analysis. And today we are going to analyze the judgment of Supreme Court and different high courts. Okay, so in the point number first, we are having Kerala High Court's judgment, in which the Kerala High Court said that exploitation of pilgrims who are on pilgrimage to Sabrimala to worship Lord Ayappa cannot be permitted. We all are very aware of this टेम्पल सबरीमाला टेम्पल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में देखने को मिलता है. ठीक है ना. अभी हमने सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी कवर किया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें विमेन को लेकर बात किया गया था कि साहब अगर कोई भी विमेन जो है वो ड्यूरिंग हर पीरियड्स वो एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि उनको हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि दैट लेडी इज नॉट प्योर. क्लियर है. तो उसको लेकर भी ये जो वहां की जो कस्टम्स हैं उनको क्या किया गया था, उनको सेटिसाइड किया गया था. बट अगेन अनदर इशू वाज रिलेटेड टू सबरीमाला टेम्पल, जहां पर जो पिलग्रिम्स हैं, जो वहां पर श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा के पैसे लिए जा रहे हैं. बेसिकली देयर इज एक्सप्लॉइटेशन विद द पिलग्रिम्स by extracting 10 rupees, by imposing unnecessary 10 rupees by the board of that temple. क्लियर हो रहा है कि भाई अगर आप उनके पर सिंदूर चंदन वगैरह चढ़ाना चाहते हो, फॉर दैट यू नीड टू पे 10 रुपीज ईच, विच इज नॉट जस्टिफाइड इन एट ऑल. तो यहां पर ही कंटेंशन रेस किया गया था कि सर वाई वी सपोज टू पे 10 रुपीज इफ यू वांट टू परफॉर्म द रिचुअल एट द लॉर्ड अयप्पा टेम्पल. क्लियर हो रहा है. तो केरला हाईकोर्ट ने बोला कि साहब इस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दैट. क्लियर है. गुड मॉर्निंग यशा, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग शैली, वेरी गुड मॉर्निंग. So in the case Manoj S. Nair and another versus Travancore, Devaswam Board and another. So a petition was filed before the High Court challenging a tender notification issued by the Devaswam Board earlier, which allowed recognized private entities to collect 10 rupees per person at Irumule, the main base camp for pilgrims for Potikuthal. Potikuthal is a ritual basically applying विभूति सिंदूर और चंद्रम. अगर आप जो है लॉर्ड अयप्पा जी के ऊपर इस टाइप की चीजें अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो आप विभूति लगाना चाहते हो, ठीक है ना, जिसको अपन एक तरीके से राख भी बोलते हैं, सिंदूर हो गया, ठीक है ना, वर्मिलियन और चंदन. क्लियर है. अगर आप इस टाइप की चीजों को अप्लाई करना चाहते हो, फॉर दैट यू नीड टू पे 10 रुपीज. क्लियर है. सो बेसिकली दिस फॉर दिस थिंग बेसिकली देवास्वम बोर्ड इशूड अ टेंडर टू प्राइवेट एंटिटीज कि भैया आप इसके लिए प्रॉपर प्राइवेट एंटिटीज जो है वो इस 10 रुपए को निकलवाने के लिए इन्होंने प्रॉपर टेंडर इशू कर दिया, और प्राइवेट एंटिटीज ने जो है इसको जो है टेंडर भर के इसका ठेका भी ले लिया. मतलब ठेके पर ये चीजें की जा रही है. क्लियर है. द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट, so basically the petitioner devotees of Lord Ayappa argued that the tender notification permitting charges for Potikuthal violated their constitutional right to religious freedom. They clearly contended that the petitioners clearly contended that before the High Court that sir, if we are going to pay 10 rupees for that particular ritual which were followed from last many years, then this is clearly the violation of our constitutional rights. ठीक है ना, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है, ये चीज बोली गई. फर्दर they stated that this ritual has traditionally been performed freely by pilgrims, although they also had the option of giving free donation through hundis capped at certain points. बोले साहब हमारे पास ऑप्शन हमेशा से रहा है कि हम इस चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करें, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता था. हाँ, ये एक अलग बात है कि हम डोनेट कर सकते थे, वो भी फ्री कंसेंट से. आप ये प्रेशर डाल के, आप ये प्रेशराइज करके 10 रुपए नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते इस रिचुअल के लिए. क्लियर हो रहा है. तो उन्होंने बोला कि साहब ये जो जबरदस्ती का जो कॉस्ट इंपोजिशन है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल. द बोर्ड हैड अर्लियर ट्राइड टू जस्टिफाई इट्स कंट्रोवर्शियल टेंडर इन्विटेशन. तो जब ये कंटेंशन रेज किया गया, when the High Court asked the Devaswam Board about that particular ritual, the imposition of 10 rupees on the pilgrims, so they initially they tried to justify its controversial tender invitation कि सर प्लीज समझिए हम ये सो एंड सो रीजन की वजह से इसको अप्लाई करते हैं. बट फर्दर
but has now reportedly rolled back its tender and announced that porticulture will be provided by the board free of cost. लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि नहीं साहब इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा because they don't have justified answer, and that's the only reason they are taking back their decision for imposition of the 10 rupees. Clear हो रहा है? For the performance of porticulture. The board had also announced that strict legal action will be taken against anyone found demanding a fee for conducting the ritual. और बोर्ड ने ये भी बोला है कि if any person found for imposing the 10 rupees for that ritual, that person should be taken with the strict hands. ठीक है ना? So the High Court observed that exploitation of pilgrims who are on the pilgrimage to Sabrimala to worship Lord Ayyappa cannot be permitted. तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला we are not going to tolerate such type of exploitation with the pilgrims. Clear है? So people basically visited that place, that temple, to perform the ritual. ठीक है ना? तो वो to satisfy their religious feelings. But what you are doing, you are just imposing 10 rupees, which is the basic ritual every person who want to perform while arriving at the Ayyappa temple. क्लियर हो रहा है? तो लॉर्ड अयप्पा जी के पास पहुंचेगा बंदा, ये करेगा ही करेगा, तो आप इसके लिए 10 रुपए जो लगा रहे हो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. क्लियर है? तो नो डिवोटीज or Sabrimala pilgrims can be exploited by any person the based on any usage like the one stated in other porticulture. तो उन्होंने बोला कि साहब इस टाइप की चीजें हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे. क्लियर हो रहा है? तो ये था हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट. एंड फाइनली केरला हाई कोर्ट डायरेक्टेड दैट it is for the board to take necessary steps to ensure no illegal activity by any person is permitted inside the temple premises of either Erumili temple or any of the temples under its management during Masa Puja and Mandala Magaram Vela. So इन्होंने क्या बोला कि साहब न केवल इस टेम्पल में, बाकी किसी और टेम्पल में we are not going to accept the situation you arise in this particular temple. ठीक है ना? तो बोले साहब किसी भी टेम्पल में exploitation we are not going to accept the exploitation of any pilgrims. Clear हो रहा है? तो आपके board, Devaswam board, it is a basic direction issued to the Devaswam board. The temples which are managed by the Devaswam board should be treated equally, and no extra cost should be imposed on the pilgrims. So this is the point number first. I hope this point is clear. In which the Kerala High Court clarified that कि साहब किसी भी श्रद्धालु से कोई भी फालतू का पैसा नहीं लिया जाएगा. I hope the things are quite clear. Okay, so let's move further. Let's jump on the point number second. So basically in the point number second we are having a very interesting judgment. हमने देखा है कि साहब initially the girls basically contested for the Miss UP or Miss MP, Miss Delhi. Then further they jump on the Miss India. So same thing. The same type of contest is for the married ladies, like for Mrs. India, pageant winners. Clear it? So this news is related to the winner of Mrs. India. So definitely, if any lady compete in Mrs. India and won that particular competition, then definitely उसकी क्या मतलब इच्छा क्या होगी, उसकी desire होगी that lady should must compete in Mrs. World competition. ठीक है ना? ऐसा होता है क्योंकि Mrs. India के बाद आप Mrs. World पर पहुंचते हो. तो ये जो है ना बहुत बेसिक सी चीज है. तो यहां पर हुआ क्या कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने टेम्परेरी इंजंक्शन इशू किया अगेंस्ट मिसेस इंडिया पीजेंट विनर शेरी सिंह. 2023 की जो मिसेस इंडिया विनर हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया है कि दैट शी कैन नॉट कंपीट इन मिसेस वर्ल्ड कंपटीशन. क्यों किया ऐसा देखते हैं एक बार. इन द केस मोहिनी शर्मा वर्सेस प्रिया सागी एंड अदर्स. सो शेरी सिंह announced her intention to compete in Mrs. Universe 2024 pageant, which is being held in South Korea from October 2 to 9, 2024. 2 से लेके 9 तक जो है there is a competition of Mrs. Universe. ठीक है ना? Basically organized in South Korea this time. ठीक है ना? So Sherry Singh want to participate, and further Sherry Singh announced that she is going to participate in that particular competition of Mrs. Universe. ठीक है ना? मोहिनी सत्येंद्र शर्मा, the sole proprietor of Mrs. India Incorporation, ठीक है ना, approached the court alleging that the Singh's participation violates the terms of her agreement with Mrs. India pageant. तो यहाँ पर जो मोहिनी सत्येंद्र शर्मा है, उन्होंने basically that lady raised the contention against the announcement given by the
शेरी सिंह, तो इन्होंने बोला कि सर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ मिसेस इंडिया इनकॉर्पोरेशन शेरी सिंह इज नॉट हैविंग अथॉरिटी टू पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन within the 5 years of winning the Mrs. India competition, ठीक है ना, without the permission of the Mrs. India incorporation. बात समझ में आ रही? बात इनका बोलना ये था कि साहब बिना हमारी परमिशन के शेरी सिंह जो है वो अगले 5 साल तक किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. क्लियर है? ये किसने बोला? मोहिनी सत्येंद्र शर्मा कंडीशन रेस करते हुए. साहब आपने अनाउंस कर कैसे दिया? आपने हमसे परमिशन ली नहीं है. समझ में आ रही बात? तो आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन ऑफ मिसेस इंडिया, आप जो है बिना हमारी परमिशन के, मिसेस इंडिया कॉर्पोरेशन की परमिशन के बिना आप कैसे जो है कंपीट कर सकती हो या अनाउंस कर सकती हो? क्लियर हो रहा है? तो शर्मा's legal counsel urged that the court to grant urgent interim relief against Singh, arguing that according to the terms of the agreement between the pageant and its contestant, the organization has invested significantly in the training, grooming and mentoring of participants. तो इन्होंने बोला कि साहब क्योंकि जो विनर्स होते हैं, सॉरी जो ये जो कंपनी है, ठीक है ना, और जो कंटेस्टेंट्स हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई आप जीतने के बाद जो है कहीं पर भी 5 साल तक काम नहीं करोगे हमारे बिना परमिशन के. क्लियर हो रहा है? आप एक तरीके से हमारे लिए काम करोगे क्योंकि हमने आपकी ग्रूमिंग, ट्रेनिंग और मेंटरिंग में बहुत पैसा कमाया, बहुत जो है पैसा लगाया है. क्लियर हो रहा है? So therefore, any future participation in other pigeons must have the express consent of Mrs. India Incorporation. क्लियर है? तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो किसी में पार्टिसिपेट करना तो you need to take our consent for the participation in any other competition of the similar nature. क्लियर है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट में किसी में पार्टिसिपेट करोगे आप. तो शर्मा's counsel confirmed that Sherry Singh had been properly served with notice regarding the interim application. However, she chooses not to appear in court to contest the claims made against her. तो बोले साहब हमने इनको नोटिस भी सर्व किया था, ये जो प्रोसीडिंग चल रही है, and then also वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुई. क्लियर है? So Bombay High Court, while allowing the ad interim injunction, what is interim injunction? Which is basically during the proceeding. Any stay order imposed by the court during the proceeding should be considered an interim injunction. And an interim injunction क्या होता है? जो क्योंकि दो महीने का टाइम जो है कोर्ट के पास होता है फॉर इशूइंग द इंटरम इंजंक्शन. क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, वी वांट इमीडिएट स्टे ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग, देन द कोर्ट नीड टू इशू एड इंटरम इंजंक्शन. जो इंटरम इंजंक्शन का भी इमीडिएट जो एक तरीके से जो वो है एक छोटा सा रूप. क्लियर है? तो सेड बॉम्बे हाई कोर्ट व्हाइल इशूइंग द एड इंटरम इंजंक्शन, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी तो आई नहीं थी, शेरी सिंह यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं हुई, इसलिए इन्होंने एक तरीके से एड इंटरम इंजंक्शन इशू करते हुए क्या बोला? आई एम सेटिस्फाइड दैट द प्लेंटिफ, द प्रोपराइटर ऑफ मिसेस इंडिया इनकॉर्पोरेशन, हु इज द मोहिनी सत्येंद्र शर्मा, हैज मेड आउट अ प्राइमा फेसी केस फॉर द ग्रांट ऑफ इंटरम एड इंटरम रिलीफ. बोले साहब यहाँ पर जो मोहिनी सत्येंद्र शर्मा जी जो है, जो प्लेंटिफ है, उन्होंने अपनी पार्ट को पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया है. बिकॉज इफ वी आर नॉट गोइंग टू इशू द एड इंटरम इंजंक्शन, देन डेफिनेटली the thing which is going to happen, like if the Sherry Singh participated in Mrs. Universe competition, then it goes against the Mrs. India Incorporation. That's the only reason why we are issuing this stay order or ad interim relief in favor of plaintiff. So this is more so since defendant number 3, Mrs. Sherry Singh, though served as chosen not to appear today. Also, since defendant number 3, despite being granted time to file an affidavit and reply since April 2024, has chosen not to do so. Hence, there is today no contest and or dispute to the case as pleaded by the plaintiff. तो उन्होंने बोला कि साहब आपको चांस दिया गया, आप अपीयर भी नहीं हुई, आपको चांस दिया गया, आपने एफिडेविट फाइल नहीं किया, कुछ भी आपने चीजें नहीं करी. That's the only reason why we are issuing ad interim relief in favor of plaintiff in the absence of defendant number 3. So this is our point number 2. I hope this point is clear. Okay, so let's move further. Okay, again we are having Bombay High Court's judgment in which the Bombay High Court levied cost rupees 1 lakh on a man for objecting to transfer plea of his estranged wife. Basically, what happened in this case? A transfer petition was filed before the High Court by estranged wife. एक अलग हो चुकी बीवी ने एक ट्रांसफर पिटिशन फाइल किया था. और ट्रांसफर पिटिशन क्या था कि वो अपना डाइवोर्स पिटिशन जो है वो ट्रांसफर कराना चाहती थी. क्यों? क्योंकि उनको जो ट्रेवलिंग में टाइम लगता था वो बहुत ज्यादा था. उन्होंने जस्टिफाइड रीजन दी. क्लियर हो रहा है? लेकिन उस पर जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया बाय हस्बैंड इज नॉट जस्टिफाइड इनफ. तो कोर्ट को ऐसा लगा कि यार यहाँ पर ना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप अननेसेसरी की हार्डशिप जो है ना अपनी वाइफ को दे रहे हो. तो क्या हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है.
In the case Sarita Rahul Sharma versus Rahul Udayaraj Sharma, a civil application, miscellaneous civil application, was filed before the High Court by a estranged wife, a mother of their 15 months old daughter, seeking to transfer their divorce petition from Vasai Court to Thane to Bandra, Vasai Court in Thane to Bandra Court in Mumbai. So basically, a lady who is transfer their divorce petition from Vasai to बैंड्रा क्लियर हो रहा है. तो इन्होंने क्या बोला कि साहब इसके लिए इन्होंने एक सिविल एप्लीकेशन फाइल कर दी बिफोर द हाई और इन्होंने बताया कि सर मेरे लगभग 15 महीने की बेटी है, उसको लेकर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. So the wife had cited the overwhelming challenges of doing an 8 hours round trip in order to attend court hearing, emphasizing that traveling with a young child made the journey nearly impossible. So that wife clearly contended before the court, sir, I'm having a 15 months old child and I need to travel 4 months from this side, 4 hours from this side and 4 hours from the opposite side. So basically, the journey for attending the normal proceeding of the divorce petition, which was filed by me against my husband in the Vasai court, I want the transfer of that proceeding from Vasai to Bandra. ठीक है ना, जिससे कि मेरा एटलीस्ट ट्रेवलिंग टाइम बचेगा. बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है. दिस इज नेचुरल, दिस इज क्वाइट नॉर्मल. Further, the High Court observed that if the wife has to travel along with her infant minor daughter, it would be all the more difficult for her to travel since boarding and alighting from local train on the Western Railway corridor at any given time during the day is an extremely difficult proposition, considering that the trains are overcrowded at all times. So, after looking into the situation from which the that lady must gone through, if that lady want to attend the proceeding at Vasai, then definitely that lady have to travel from Bandra to Vasai, ठीक है ना. और उसके लिए उनको जो है वेस्टर्न रेलवे जो कॉरिडोर है वहां से ट्रेन लेनी पड़ती है. दैट इज ओवरक्राउड एट ऑल टाइम. So this is the observation given by the High Court. It is nearly impossible to travel 8 hours round trip with that 15 months old child. You can attend that the divorce proceeding. Clear? So the High Court said that financially, respondent husband is therefore well off. So against which the husband clearly said that, okay, sir, if my wife wanted, I can give her the cost of कन्विंस, ठीक है ना, मैं इनको आने जाने के खर्चे दे दूंगा. तो कोर्ट ने बोला कि हाँ पता है पैसे तो बहुत है तुम्हारे पास, ठीक है ना, ऐसे भी और वैसे भी. Mainly due to that reason, respondent husband cannot insist that he will bear the travel cost of the applicant wife to attend the proceeding in marriage petition in Vasai. तो उन्होंने बोला कि साहब क्योंकि आपके पास पैसे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते ओके आई एम गोइंग टू पे योर ट्रेवल कॉस्ट, ठीक है ना, फ्रॉम वसई टू बैंड्रा और बैंड्रा टू वसई. क्लियर हो रहा है? सो द सबमिशन मेड बाय मिस्टर त्रिपाठी इज विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स केस ऑल टुगेदर. तो बोले साहब दिस कंटेंशन व्हिच वाज रेज्ड बाय द काउंसिल फॉर द हस्बैंड क्लियरली सेड दैट साहब कि your justification कि said that okay sir I am going to pay the travel expense is not justified enough. Clear हो रहा है? So they said that not once has Mr. Tripathi considered the fact that the applicant wife is required to support and care for her 15 months old infant minor daughter, and if she is to attend the proceeding in Vasai court, how and who would take care of child in her absence. तो इन्होंने बोला कि साहब आपने ये भी चीजें समझने की कोशिश नहीं करी. यू आर द हस्बैंड, यू आर द फादर ऑफ दैट 15 months old daughter, ठीक है ना, गर्ल. आपने ये नहीं समझा कि कैसे आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी आप इसको सपोर्ट कर दें कि कैसे ये आएंगी, वो नहीं. आप बोल रहे हो कि हम इसके पैसे दे देंगे. तो बोले साहब बात यहाँ पैसे की नहीं है, यहाँ पर ये हार्डशिप की है जो उनको ट्रेवलिंग टाइम में जो है उनको जो फील करनी पड़े. क्लियर हो रहा है? सो द बॉम्बे हाई कोर्ट while allowing the transfer plea said that in my opinion applicant wife deserves the award of cost as it would go a long way in ameliorating her hardship and difficulty in the interest of justice. बोले साहब बहुत लंबे समय से वो ट्रेवल कर रही है इधर से उधर और कोई सुनने वाला नहीं था. That's why we are in a favor to award that lady some compensation and that husband is liable to pay that compensation. So that's the only reason the court levied cost of rupees 1 lakh on the husband. तो उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए आप जो है वाइफ को देंगे. यहाँ पर जो आपने अननेसेसरी की हार्डशिप दी है while challenging the transfer petition, उसमें जो आपने रीजनिंग दी थी, जो आपने जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट किए, they are totally baseless and they are inhuman in nature. Clear है? So this is our point number 3. Meanwhile वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा. आगे बढ़ेंगे. In the point number 4, we are having Kerala High Court's judgment
in which the Kerala High Court refused to quash a criminal proceeding against a priest accused of raping a woman after promising to marry her. We have like covered so many cases related to uh, uh, रेप ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज. हमने कई बार केसेस में पढ़ा है कि भाई एक बंदे की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा. दैट शुड नॉट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ रेप. क्यों? दैट पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड. बट इन दिस केस द सिचुएशंस आर क्वाइट डिफरेंट. ठीक है ना. द केरला हाई कोर्ट सेड दैट इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू क्वेश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ प्रीस्ट. क्लियर हो रहा है? व्हाई? बिकॉज द केरला हाई कोर्ट सेड दैट in this case the priest is not married, and that then a person who is not married can give the false pretext to a lady and committed sexual intercourse with that lady. क्लियर हो रहा है? तो यहां पर कहीं ना कहीं जो चीजें निकल कर आई हैं, the reasonability is different. So this point will help us to understand the different scenario, different situation, if any person is married or if any person is not married. So what happened? Let's see. In the case Jos Mathai Mailadat, ठीक है ना, versus the state of Kerala. A petition was filed before the High Court by the accused for quashing the criminal proceeding. So basically, the charges of rape were imposed on the accused, and the accused approached the High Court for quashing these criminal charges. Clear हो रहा है? The complainant alleged that the accused was serving as a priest at St. John's Baptist Church in Muvatupuzas, Kalur, when she approached him to discuss her and her son's baptism. ठीक है ना. तो अपने बेटे के बैप्टिज्म के लिए, ठीक है ना, तो जो शुद्धिकरण एक तरीके से होता है, ये जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, इनमें एक बेसिक प्रोसेस होता है जहां बच्चों का बैप्टिज्म करवाया जाता है. ठीक है ना. अगर आपने हॉरर मूवीज देखी तो आपको पता होगा बैप्टिज्म क्या होता है. ठीक है ना. तो ये कहां पहुंची? ये सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च पहुंची, जहां पर कंप्लेनेंट अपने बच्चे अपने बेटे का बैप्टिज्म करवाना चाहते हैं. क्लियर हो रहा है? अब इसके लिए ये प्रीस्ट के पास पहुंची जो कि अक्यूज है. The priest proceeded to collect her contact detail and later invited her to the church to discuss the matter. इन्होंने जब ये पहुंची तो उन्होंने बोला कि ठीक है, काम करिए, please share your contact details with me, or and I will contact you soon for that process and I will explain the procedure to you as well. Clear है? And further, that priest invited the complainant to the church, ठीक है ना, to discuss the whole matter, the process of baptism. Clear हो रहा है? On one such occasion, he allegedly lured her into a bedroom and after locking the door, forced her to have sexual intercourse. तो उन्होंने बोला कि साहब ऐसी एक ओकेजन पर जब ये पहुंची तो इनको जो है बेडरूम में लॉक किया और इनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया. ठीक है ना. She claimed that her sexual encounters spent several months on the pretext of him leaving his priesthood and marrying her. So the complainant informed the court that the priest promised that lady that the accused is going to leave his priesthood. वो priesthood जो है उसको छोड़ देगा, क्योंकि being a priest you cannot marry any person. Being a nun you cannot marry any person. ठीक है ना. अगर आप if you want to be a priest or if you want to be a nun then definitely आपको ये सारी चीजों के साथ sacrifice करना पड़ता है. क्लियर हो रहा है? अब इन्होंने क्या बोला कि नहीं सर वो priesthood छोड़ देगा और उनसे शादी करेगा. ठीक है ना. So on the false pretext of marriage, that person committed continuous sexual intercourse on multiple occasions with the lady, with the complainant. So, but in end, it ended in January 2024 when the accused went back on his promise. तो जब उस अपने वादे से जब वो मुकर गया तो basically that lady filed a complaint under section 376 of the IPC, which is the offense of rape. ठीक है ना, on the false pretext of marriage against the accused. So the High Court said that the de facto complainant, who is legally eligible to solemnize marriage as there was no legal marriage at the time, at any point of time. So High Court said that if any married person like promise such type of thing that I'm going to marry, in that situation we are not going to accept that thing. But in this case, priest is not married, that person is unmarried, the accused is unmarried, and that person after like leaving his priesthood, that person is eligible to marry. बात समझ में आ रही है? और ऐसा भी नहीं है कि आप प्रीस्ट बन गए तो आप शादी कर नहीं सकते. ठीक है ना, वो कर सकते हो. So was given promise to marry by the accused after expressing his readiness to giving up his priesthood after subjecting the de facto complainant to repeated sexual intercourse, promising to marry her, retracted from the marriage. तो इन्होंने बोला कि साहब यहाँ पर that person is having the right and the lady is under the illusion that that person is going to marry. क्लियर हो रहा है? और वो बंदा कर सकता था. अगर ऐसा होता कि नहीं वो बंदा शादीशुदा है, वो शादी नहीं कर सकता, वो एक अलग बात.
समझ में आ रही? लेकिन इन दिस सिचुएशन द पर्सन इज द प्रीस्ट वाज ऑलरेडी अनमैरिड, ठीक है ना, वो बिना शादीशुदा के था, मतलब वो शादीशुदा नहीं था, ठीक है ना, वो क्या था, वो सिंगल था, तो वो शादी कर सकता था। यही रीजन दिया हाई कोर्ट ने, आफ्टर लुकिंग इनटू द फैक्ट्स एंड आफ्टर लुकिंग इनटू द लाइक मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, वो ये क्लियर हो रहा है कि वो बंदा शादी कर सकता है और उसने फॉल्स प्रोटेक्ट ऑफ मैरिज पर ही उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। दिस विल अमाउंट टू रेप। So the Kerala High Court, while rejecting the plea, said that since the relationship continued on the promise of marriage, there is no delay in lodging the FIR. बोले साहब FIR भी जो है टाइमली फाइल की गई, इसमें भी कोई डिले नहीं है। क्या आप ये बोलोगे साहब यहाँ पर जो है बेवकूफ बनाया गया? ऐसा कुछ है नहीं। Thus, prima facie, allegations are made out warranting the trial of the matter, and in such a case, there is no reason to close the proceeding merely on the fact that earlier the de facto complainant filed a petition to quash the crime. तो इन्होंने बोला कि साहब कोई रीजन नहीं है यहाँ पर कि हम यहाँ पर जो है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वाइस डाउन करते हैं। यहाँ पर सफिशिएंट मटेरियल है, वहाँ पर सफिशिएंट एविडेंस है, एफआईआर भी टाइमली फाइल की गई है, फॉल्स प्रिटेक्स्ट यहाँ पर जो है मैरिज का किया गया था। दैट्स व्हाई द पर्सन, द अक्यूज, it's looking liable. The case the situation is not prima facie clear. So if we want to if we want the clarification in this case, then the trial is required. And that's the only reason why we are not going to quash the criminal proceeding initiated against the accused. Clear हो रहा है? This is our point number 4. I hope this point is quite clear. Okay. So let's move further, and before moving further, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है ना। In case you guys having any confusion with anything, like anything, you can post your comment, ठीक है, in the comment section, और मैं definitely उसका reply जरूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। In the point number 5, we are having Allahabad High Court judgment in which the Allahabad High Court ordered the district judge of Ghaziabad to inquire as to how two contradictory orders were uploaded online in a defamation case. This point is quite interesting and unique in nature. हुआ क्या है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने बेसिकली मजिस्ट्रेट कोर्ट इशूड टू ऑर्डर्स इन द सेम केस। एक में अंडर सेक्शन 203 वो क्वाइस डाउन कर रहे हैं और सेक्शन 204 में समन सर्व कर दिया। बोथ द ऑर्डर्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर एंड दे वर इशूड इन द सेम केस अगेंस्ट द सेम पार्टी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेट्स सी। तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से, डिस्ट्रिक्ट जज से ये बोला है कि प्लीज इंक्वायर इन दैट मैटर, दैट हाउ कैन two orders can be issued, how two orders can be issued by a magistrate court against the same party in the same matter, ठीक है ना, and both the orders are contradictory in nature. So in the case Parul Agarwal versus State of UP and another, an application was filed before the High Court under section 482 CRPC, the inherent power of the High Court, in which the High Court was informed that the trial court on February 13 passed two contradictory orders the same day in a case seeking quashing of the defamation case. तो यहां पर कंटेंशन ये रेस कर दिया गया कि साहब, हाईकोर्ट से बोला कि साहब ये बताइए कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उन्होंने 13 फरवरी को दो ऑर्डर्स इशू किए जो कि कॉन्ट्रैक्टरी थे नेचर में, कैसे हो सकता है ऐसा? क्लियर है? सो द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट हैज आर्ग्यूड एट लेंथ, हाउएवर एट दिस स्टेज द कोर्ट टेक्स नोट दैट इन बोथ द केसेस मजिस्ट्रेट कंसर्न्ड हैज पास सेल्फ कॉन्ट्रैक्टरी ऑर्डर्स ऑन द सेम डेट, ठीक है ना। कोर्ट ने क्या देखा कि साहब यहां पर तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्टरी ऑर्डर्स ही इशू किए गए बाय द मजिस्ट्रेट। सो बाय वन ऑर्डर passed under section 203 CRPC, complainant was dismissed, complaint was dismissed, ठीक है ना। तो जो डिफेमेशन केस इनके अगेंस्ट से फाइल हुआ था, बेसिकली हुआ क्या था, एक हस्बैंड वाइफ ने कंप्लेंट फाइल किया था, बेसिकली एक एफआईआर फाइल किया था अंडर सेक्शन 499 and 500 ऑफ द आईपीसी, व्हिच इज बेसिकली द डिफेमेशन केस, ठीक है ना, अगेंस्ट द एप्लीकेंट, ठीक है ना। अब क्यों करा था? क्योंकि इन्होंने काफी सारे न्यूज़पेपर्स में कुछ चीजें जो है पब्लिश कर दी थी, ठीक है ना, अगेंस्ट दैट हस्बैंड एंड वाइफ जो कि बेसिकली कंप्लेनेंट थे। क्लियर हो रहा है? तभी इनके अगेंस्ट में डिफेमेशन केस जो है फाइल हो गया। अब इसी डिफेमेशन केस से रिलेटेड ऑर्डर इशू किया गया, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 203 सीआरपीसी, और उसमें क्या था कि उसमें उन्होंने कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। लेकिन फर्दर दे आल्सो इशूड अ ऑर्डर अंडर सेक्शन 204 जिसमें उन्होंने समन कर दिया था एप्लीकेंट को कि भाई आइए अपने केस को प्रेजेंट करिए आके, ठीक है ना। सो बोथ द ऑर्डर्स आर कॉन्ट्रैक्टरी नेचर, ठीक है। एक में आप डिसमिस कर रहे हो, एक में आप अलाउ कर रहे हो, तो मानना कौन सा है भाई, ये तो बताओगे। सो द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज्ड सबमिटेड दैट while the order by which the complaint was dismissed was not signed, the order by which the accused was summoned was a signed order. तो यहां पर काउंसिल ने जो लाइक मैजिस्ट्रेट्स आपके बिहाफ पर जो था उसका बोलना ये था कि सर the order which was dismissed under section 203 was not signed by the authority,
ठीक है ना। तो वो मजिस्ट्रेट साहब ने साइन नहीं किया था, अथॉरिटीज ने साइन नहीं किया था, इसलिए उसको हमने क्वाइज डाउन कर दिया। और सेक्शन जो 204 के अंदर जो हमने समन ऑर्डर इशू किया, दैट ऑर्डर वाज साइंड बाय द अथॉरिटी। क्लियर हो रहा है, यही कंफ्यूजन हो गया, लेकिन दोनों ही ऑर्डर को पब्लिश कर दिया गया, इसलिए वो कंफ्यूजन का रीजन बना। द जुडिशियल ऑफिसर टेंडर्स हिज अनकंडीशनल अपॉलॉजी। जब इनसे जवाब मांगा गया तब इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी यहां पर जो है टेंडर कर दी, किसने, जुडिशियल ऑफिसर ने, दैट मजिस्ट्रेट हु इशूड दैट ऑर्डर। क्लियर है, एंड एक्सप्लेन दैट द स्टाफ ऑफ दिस कोर्ट हैज अनइंटेंशनली अपलोडेड एन अनसाइंड एंड ड्राफ्ट ऑर्डर विदाउट हिज कंसेंट। तो उन्होंने बोला कि साहब साइंड और अनसाइंड बोथ ऑर्डर्स वर पब्लिश्ड बाय द स्टाफ ऑफ हिज कोर्ट। सो फॉर दैट the judicial officer tender the unconditional apology. Clear हो रहा है? So the Allahabad High Court, while allowing the plea, said that considering the peculiar facts of the case, since two contrary orders were passed, both of them are liable to be set aside. तो उन्होंने बोला क्योंकि दो contradictory orders हैं, हम दोनों को set aside करेंगे. Now the matter taken back to the trial court again, and trial court will decide what is going to happen in this case within the 2 months period. Clear? So this is the judgment given by the Allahabad High Court. I hope the point number 5 is quite clear. So we are done with today's session, guys. I hope you enjoyed the session. My name is Varun Saxena, and today we covered the legal news analysis session for 9th of October 2024. If any person is having any confusion, please let me know in the comment section. Thank you so much.